Okay, good morning, everyone. Good morning, Amisha ji, Shruti ji, Amudha ji, Meenu ji. Am I audible and visible? Okay, that's nice. Okay, we'll be starting in next 1 minute. Let some people join. Okay, so our today's topic is on cervical, very common topic and very common issue we all are facing these days. Many of the people face this cervical issue because of desk jobs, because of wrong postures and because of unhealthy lifestyle. Okay, तो मेरे जो मैं जो बोलूंगी वो हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा. So I'll be speaking in Hindi and English both. Okay, so let's start with cervical. So basically, what do you understand by this cervical? See, there are three regions of the back: the upper, middle and lower. हमारे जो back है, हमारा जो spine है, वो तीन regions में बटा हुआ है: upper, middle और lower. Okay, upper को बोलते हैं cervical, middle को बोलते हैं thoracic और lower को बोलते हैं lumbar. So these three regions of the spine, which is first one is cervical, the neck region, second is the thoracic region, the upper chest region, and the third one is lumbar, the lower back region. ओके, तो इन तीनों को हम समझेंगे. हमारा आज का टॉपिक है सर्वाइकल, दैट इज द फर्स्ट रीजन ऑफ द स्पाइन, द अपर बैक, द नेक, द शोल्डर्स. ओके, तो बेसिकली सर्वाइकल, आवर स्पाइन कंसिस्ट, अगर हम सर्वाइकल की बात करते हैं तो C1 से लेके C7 तक हमारा सर्वाइकल होता है. तो बेसिकली द वर्टेब्रा C1 to C7 consists of our cervical region, जो कि you can see this thing till here. Okay, somewhat till यहाँ से start होता है, यहाँ तक होता है, हमारा neck को cover करता है. Okay, so any kind of muscle spasm or any kind of pain in this region can cause cervical issues, but हम उसको सिर्फ normal pain के साथ नहीं जोड़ेंगे. अगर हमें सिर्फ normal stiffness या normal pain रहता है, that doesn't mean we have cervical issues. सर्वाइकल इश्यूज के सिम्टम्स के बारे में वी विल डिस्कस कि सिम्टम्स क्या रहते हैं, देन वी विल डिसाइड वेदर वी हैव दिस सर्वाइकल इश्यू और नॉट. ओके, so pain and spasm of muscle in upper back, back of the head and neck. ठीक है, back of the head हमारा सर का पिछला भाग, हमारी गर्दन और हमारा शोल्डर्स. अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा पिंचिंग पेन रहता है, स्टिफनेस बना हुआ रहता है कि इवन व्हेन वी आर एक्सरसाइजिंग देयर स्टिल अ स्टिफनेस, वी कैन फील numbness in the neck region and the restricted movements of the neck, we are unable to move the neck very freely. जब हम नेक में एक भारीपन महसूस करते हैं कि नेक को मूव करने में भी हमें तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत खिंचाव है, there is a lot of pressure in the neck region, that means we have cervical issues. Okay, because our neck is very sensitive, and again, if we have no cervical, our neck should be absolutely free to move in all the directions. But if a person has cervical, he is unable to move the neck very freely in all the directions. He will face a lot of stiffness. Whether he will move the neck, he will be very slow, he will be very uncomfortable moving the neck, and especially when he will look down, he will face lot of pain in the back of the head. Okay, तो यहाँ से हमें समझना है कि नेक में अगर बहुत ज्यादा स्टिफनेस है रेगुलर के कंपैरिजन के थोड़ा सा ज्यादा, तो दैट मीन्स हमारा सर्वाइकल थोड़ा सा गड़बड़ है. ओके, देन अगेन शोल्डर्स. सर्वाइकल कैन लीड टू फ्रोजन शोल्डर्स एज वेल. अगर सर्वाइकल का प्रॉब्लम ज्यादा लंबा चलता है तो फ्रोजन शोल्डर्स की समस्या भी हो सकती है, जिससे हमारे शोल्डर्स भी लॉक, हमें ऐसा लगता है कि शोल्डर्स आर आल्सो गेटिंग लॉक्ड, so shoulders are also getting very stiff, and then that numbness starts coming from shoulders to the arms as well, the upper arm, the lower arm and even the fingers. Okay, so if the cervical severity is more, cervical का severity बढ़ता जाता है, तो वो पेन हमारे सर से हमारी neck जाते जाते shoulders, upper arms, lower arms and fingers को भी पहुंचता है. So if you are facing any kind of pain and numbness in your fingers, if you think that your fingers are not very free and you are facing a lot of numbness in the wrists as well, in the joints as well, in the upper arm and the lower arm, that means we have cervical issues. Okay,
ओके, कॉजेज ऑफ सर्वाइकल, सर्वाइकल के क्या क्या कॉजेज रहते हैं? फर्स्ट, बैड posture. Very very important. Why we tell you always to sit with your trunk erect, sit with your back erect? Because that posture, for example, if you are sitting like this for longer duration, the droopy shoulders, the neck, okay, our spine is in the S curvature, okay? But if you are not maintaining that proper curvature of the spine, our spine will lead to bulging of the discs, narrowing of the discs. So always remember, हमें सीधे बैठना है. अगर हम इस तरह बैठे हैं हंच बैक करके, ड्रूपी शोल्डर्स करके, नेक ज्यादा से ज्यादा हमारा नीचे ही रहता है, सर्वाइकल के इश्यूज बढ़ सकते हैं. ओके, सेकेंड थिंग, यूजिंग रॉन्ग पिलो while sleeping. See, choosing a correct pillow again is very very important. So make sure we are using the natural curvature pillow only, which will maintain the natural curvature of the neck while sleeping. There are cervical pillows available on Amazon and Flipkart. We can choose those pillows rather than going for those thick pillows. हम क्या करते हैं, वो थिक पिलोज यूज करते हैं, जो कि अगेन हमारी नेक के लिए लॉन्ग रन के लिए बहुत खराब है. अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट देन इन नियर 40s और 60s और 70 यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड स्टिफनेस इन द नेक. थर्ड थिंग, डेस्क जॉब. जिसका भी डेस्क जॉब है, बहुत ज्यादा जो लैपटॉप पे काम करते हैं, कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, उनका पोस्चर ऐसा ही रहता है. मोस्टली दे आर सिटिंग लाइक दिस, everything compressing the diaphragm, compressing the thoracic, compressing the shoulders, and then the neck is like this. तो डेस्क जॉब वर्कर्स को सर्वाइकल का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि लॉन्ग रन में आपको सर्वाइकल के इश्यूज हो सकते हैं अगर हम प्रॉपर पोस्चर को मेंटेन नहीं करते हैं. ओके, and then lack of physical exercises. You all are doing yoga, wonderful. You will never face such issues like cervical in your near future. But the people who are not performing yoga, who are not performing any sort of physical exercises, they will definitely have cervical issues. या फिर उनके chances just double हो जाते हैं cervical जैसी problems को invite करने के लिए. Okay, तो हमें make sure, अगर हमें cervical था तो कोई बात नहीं, योगा अभी से शुरू किया है, good enough. सर्वाइकल नहीं है तो कभी भी नहीं होगा इफ वी आर डूइंग योगा. बट अगर सिवियरिटी बहुत ज्यादा है तो फिर वो योगा उतना ही टाइम लेती है उसको फिर से क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए. तो हमें पेशेंस रखना है. ओके, एंड देन नाउ साइंस एंड सिम्टम्स. सो देर आर वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड कि हमें सर्वाइकल है या नहीं है. टेंशन एंड मसल स्पैज्म इन द नेक रीजन. फर्स्ट थिंग, अगर नेक रीजन में बार बार स्पैज्म आते हैं, बार बार बहुत ज्यादा टेंशन आपको फील होता है, खिंचाव महसूस होता है, नेक बहुत हैवी फील करती है, तो आपको इन चीज का ध्यान रखना है. सेकंड थिंग, शोल्डर्स भी बहुत स्टिफ लगेंगे आपको, हर वक्त आपको ऐसा लगेगा आपके शोल्डर्स को किसी ने जकड़ रखा है, इतना जकड़न महसूस होगा शोल्डर्स. थर्ड थिंग, numbness in the hands region and in the fingers as well. Okay, fourth thing, giddiness, dizziness, giddiness, चक्कर आना, फ्यूकिश फील करना. जब सिवियरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको हर वक्त ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहे हैं, गिडीनेस महसूस हो रहा है. यू विल फील वीक, मसल वीकनेस इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको फिजिकल वीकनेस फील होने लगता है, जो कि सबसे मेजर है. इस चीज का ध्यान रखना है व्हेन यू आर फीलिंग. और फिर मेंटली भी स्टक होने लगते हैं, क्योंकि जब इतनी वीकनेस आ जाती है तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आई एम नॉट एट ऑल फिजिकली फिट एंड फाइन, और वो चीज मेंटली और अफेक्ट करती है और वो सर्वाइकल को और एग्रीवेट करती है. तो ये चीज का ध्यान रखना है. एंड देन रिंगिंग इन द ईयर, कभी कान में भी आवाज आती है. ओके, कान में एक रिंगिंग जैसी आवाज आएगी. तो ये सारी चीजें हैं सिम्टम्स. रानी जी, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, हम बात करेंगे बाद में. ओके, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज. मैम वन क्वेश्चन. मैम यस यस, प्लीज गो अहेड. मेरी स्पॉन्डिलाइटिस है मैम. हाँ, हम स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में ही बात कर रहे हैं. सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पॉन्डिलोसिस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पॉन्डिलाइटिस ओनली. तो ध्यान से सुनिए, ठीक है? मेरी कमर से पूरा नेक तक पेन करती हाँ जी, है, हाँ सर जी, में हम वो चक्कर ही बात जाती कर रहे हैं. रानी जी, अभी मैं आपके क्वेश्चंस बाद में लूंगी, एक बार मेरा ये सेशन खत्म हो जाए उसके बाद, ठीक है? आप है. ठीक है माइक ठीक ऑफ कर दीजिए. है. ओके ओके. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी आसनास. तो सर्वाइकल से रिलेटेड अभी तक कोई क्वेरी है या डाउट है तो प्लीज पूछिए, कि सर्वाइकल से रिलेटेड और कुछ आपको पूछना है तो यू कैन गो अहेड. देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स दी पर्टिकुलर आसना जो सिर्फ हमें सर्वाइकल के लिए बेनिफिशियल रहते हैं. और अगर सर्वाइकल की सिवियरिटी ज्यादा है तो सिर्फ वही आसन करके हम हमारे सर्वाइकल को 100% क्योर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं.
ओके, सो अभी तक कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क। एक्सक्यूज ओके, मी मैम। नहीं है तो यस यस। मैम एक्चुअली मुझे सर्वाइकल हुआ था 2020 में, और अब है ना, जैसे ये लेफ्ट वाले कान में मुझे ऐसे वाइब्रेशन से, ऐसे कुछ तेज आवाज होते ही ऐसे लगता है कुछ वाइब्रेट हो रहा है, और चक्कर भी आते हैं, है ना। तो ये क्या सर्वाइकल की वजह से होता है? यस, क्योंकि दिस मैंने इज द मेन। ईएनटी को दिखाया तो ईएनटी ने बोला आपके कान के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ ऑपरेट करें। तो मेरे ऑपरेट डाउट है। करवाना है, इट इज जस्ट द सर्वाइकल थिंग ओनली, क्योंकि ये पूरा हमारा नेक से जुड़ा हुआ होता है, नेक से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, ये सर के पीछे जो दर्द जाता है, तो ये सर्वाइकल का हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि रिंगिंग इन द ईयर, कान में आपको ऐसा लगेगा कुछ वाइब्रेशंस हैं, टिंगलिंग सेंसेशंस हो रही है, आवाजें आ रही है हल्की हल्की, कभी कभी टू बीप, हाँ, इस तरह ये की आवाजें आएंगी। तो ये आती है। सर्वाइकल का ही सिम्टम है, ईएनटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ओके, ईएनटी का कोई लेना देना नहीं है, सर्वाइकल था आपको, उस वजह से कभी कभी वो जब एग्रीवेट होता है तो कभी कभी हम फिर ये सारी कान में जो ये आपको सेंसेशंस फील होते हैं, ये नेचुरल है, बट इसको क्योर जल्दी से जल्दी करना है, मैनेज जल्दी से जल्दी करना है। ओके, ताकि ओके। ये लॉन्ग रन में और ज्यादा सिवियरिटी ना ले। क्योंकि ओके, मुझे अभी नाउ आई एम सर्वाइकल का मूविंग पेन टू। कंटिन्यू नहीं रहता है। बस ये जो एक तो कभी कभी फील होता है, कभी लेफ्ट में कभी थोड़ा राइट में, पर ये चीज है जो कान में आवाज, और एक पीछे जो हेड की साइड में ऐसे कई बार जब सोते हैं तो ऐसा लगता है सुन्नापन आ गया है पीछे, जैसे कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। हैवी हो जाता है आपका सर। हाँ 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 हाँ। तो ये जरूर मुझे मेजर प्रॉब्लम हो रही है, ये कंटिन्यू है काफी टाइम से। ठीक है, अभी जो मैं आसन बता रही हूँ, इन आसन पे अच्छे से ध्यान लगाना है और ये आसन करने शुरू करने हैं एज सून एज पॉसिबल। ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं ये चला जाएगा 100%, आई कैन गिव यू गारंटी। ओके, बट देन 3 मंथ्स रेगुलर, 3 मंथ्स रेगुलर करने, उसके बाद आपको इफेक्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। ओके ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द आसनास। फर्स्ट वन, जो जिनको सर्वाइकल बहुत ज्यादा रहता है या सिवियरिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, उनको समझना है अच्छे से। फर्स्ट वन इज भुजंगासन। We'll be lying down. Okay, make sure we are not doing complete bhujang. No, okay, because again it is compressing the shoulders and it is creating pressure on the shoulders. हम ये तब करेंगे जब हमारा cervical manage होगा. So what we will do is we will be on our elbows, okay, and we'll do saral bhujangasan where we are pushing the spine forward, rolling back the shoulders, chest out as much as you can, and then look up. And then we have to maintain this pose for at least 60 seconds, 1 minute, because सपोर्ट मिल गया हमें, अब सपोर्ट मिल गया तो हम उस आसन में कितनी भी देर बने रह सकते हैं। आसन में बने रहना जरूरी है। सी, जब भी हम किसी डिजीज का मैनेजमेंट करते हैं तो आसन को ज्यादा देर होल्ड करना होता है। अगर हम सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए आसन करते हैं तो रैपिड मूवमेंट्स चलते हैं, आसन से दूसरे आसन में स्विच होना ठीक है, पर अगर हम किसी बीमारी पर काम कर रहे हैं, किसी तकलीफ पर काम कर रहे हैं, तो हम उन आसनों को होल्ड करेंगे, क्योंकि वो थेरेपी के तौर पर काम करेंगे। फिर आसन को थेरेपी कैसे बनाएंगे? जब आसन की होल्डिंग रहेगी और एक्चुअल शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का काम चालू होगा, जहां इफेक्ट आना चाहिए वहां इफेक्ट आएगा, तो आसन को होल्ड करना है अगर कोई तकलीफ है तो। ओके, सो इस भुजंग आसन में हमें हमारे दोनों पंजे आपस में मिले रहेंगे। जस्ट गिव मी। Okay, feet together. Make sure we are not spreading the legs like this, because again it will create pressure on the lumbar. Feet together. Come on your elbows. Chest out and simply stay like this. And then make sure we are breathing long and deep. जितना लंबा गहरा सांस हम इसमें ले सकते हैं लेंगे आसन को थेरेप्यूटिक बनाने के लिए। Okay, first आसन for cervical, the best आसन for cervical. Second आसन. I'm so sorry to interrupt, but can you please Yes. take your hair back so that we can see the posture? Yes. Just give me a second. Yeah. Sorry.
Okay, is it fine now? Okay, so basically what we are doing is tucking in the elbows nicely. Be on your elbows and keep your all the fingers nicely open. All the 5 fingers are spread nicely. Feet together and then chest out and neck up. And then second variation, what we will be doing is no pressure on the arms at all. We will simply use the spine to lift up the body. Arms are free. Okay, just keep your arms like this. No pressure on the arms. And then maintain here. You can keep your hands as like this also. Okay, but make sure elbows are not out. Elbows are nicely tucked in. And then we will maintain here again 10 long deep breaths. Okay, so first one, simple. And the third one, a little complex. But make sure we will not do this when we have that severe cervical pain. Okay. Third thing, again, not this Dhanurasana. No. When we are having pain and when we are having stiffness, not a complete Dhanurasana, but make sure the knees are together, the feet are together. We will not spread them. And then only this much. Okay, not hyperextending the neck too much, not looking down. We are looking in the front. And then stay here. My knees are not getting separated. Okay, my knees are together, my feet are together. Again, if you will separate them, it will create pressure on the lumbar and then it will not affect the cervical. See, my cervical is loose now. But when I'm doing this, see, my shoulders are going back. Automatically, it is creating an effect on the cervical region and shoulders and neck. Okay. So make sure we are doing this. Breathe, relax. Third one. Okay, make sure whenever we are getting up or getting down, we are not moving the neck very rapid. Neck is controlled and then we will lift up. And for cervical, this is very, very important. It will activate your spine nicely. Okay, so make sure the arms and shoulders are in one line. Simply inhale, exhale. Inhale, exhale. Okay, this we have to do 15 to 20 times. It will activate the whole spine, cervical, thoracic, lumbar, upper region of the back, middle region of the back, and lower region of the back. Fourth asana, to give relaxation to the shoulders, very, very important. Just slide your hands and chin on ground. It will give a very, very nice stretch to the shoulders. It will relax your shoulder and it will relax your upper back region. Okay? Make sure again we are maintaining for 10 long deep breaths. Make sure we are not doing these asanas very, very rapidly. We are maintaining the pose. We are maintaining each and every pose for 60 seconds, 1 minute. Not Dhanurasana for 1 minute. Dhanurasana only for 30 seconds. Otherwise, we can maintain all these simple poses for 60 seconds to 1.5 minute as well. Then we will come. The most important asana for cervical. Right leg on the left leg, Gomukhasana. Okay. We will take the position nicely. We will try to align the knees. We will sit on both the buttocks, not one buttock lifted up. And then whichever leg is up, we will raise that hand up. Okay. Rotating, keeping at the back, taking one arm from down. Then again, if you have severe cervical, you won't be able to catch hold of your both hands. It will become difficult. So for that, make sure we are having a belt. Okay. I'll show it from the back. Grab the belt nicely like this. Okay, and then maintain. Now belt is giving you a nice support, so we can maintain this pose for long. But if you are not using the belt and if you are holding like this, you will not be able to hold it for long because again it will create pain in the shoulder region. Okay,
So make sure we are using the belt and then we are maintaining it for longer duration. Okay, 10 breaths and then 10 breaths other side. You can note down all the asanas. So if whenever you are having severe cervical pain or whenever you think that the cervical issue is going on for 5 days or 6 days, you can do these asanas with that pain also, because it will give relief. Okay, and then the simple Matsyendriya asana. Okay, so for Matsyendriya asana, what you have to do, it is the most effective asana in cervical. So fold your left leg and then take the right leg from down like this. Okay, left foot crossing the right knee. Again, equal weight on both the buttocks. The one buttock should not be lifted up. Adjust this knee. Your right hand crossing the left knee. Okay, if you can grab hold of your ankle, grab it. If you cannot, it's okay. You will simply keep the hand like this, and then keep this hand either on at the back on ground or simply lock your back, and then twist and look back. Why this asana? Because it is giving a very very good twist to the spine. It is opening the thoracic region. क्या होता है cervical में हमारा thoracic भी compress हो जाता है. हमें हर वक्त हमें ऐसे ही लगेगा यहाँ से लेके यहाँ तक सब कंप्रेस्ड है, सब ऐसा लग रहा है कि जकड़ लिया गया है. तो ये आसन उस थोरासिक को ओपन करने में मदद करेगा. शोल्डर्स को अच्छा स्ट्रेच मिलेगा. तो सर्वाइकल में जितना शोल्डर्स पीछे की तरफ रहेंगे, चेस्ट आउट रहेगा, उतना ही सर्वाइकल का पेन हमें कम होगा. तो पोस्चर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द लास्ट थिंग आई एम टेलिंग, वो ट्रैक्शन है एक. तो मेक श्योर वी हैव अ चेयर. अगर बहुत ज्यादा ही कभी कभी पेन रहता है तो क्या करना है? जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी कंप्लीट प्लीज. वन लेग डिस्टेंस. ओके, एंड देन सिंपली स्टे लाइक दिस. Maintain here. Make sure we are not going very down. Again, it will create a lot of pressure, but we have to maintain here. It will give relaxation to the shoulders again and the neck. And the last thing, hold it and then sit down. Make sure the chest is out. We are not sitting like this. Chest out, shoulders at the back and face in front. And deep breathing 10 to 15 times. Very slowly come back. These all are the asanas which do wonders to the cervical region. Okay, it will create a great effect and very helpful whenever you are facing such issues of cervical. Now, yes, go ahead. Any questions, any queries? Ma'am, Feel free. I just wanted to ask you, like since this video is being recorded, this meeting is being recorded, can we get only, if it is okay for you, can we get only the exercise part of it so that we don't make any mistake in that? Sure, there's no issue. I'll have a word with the team, so I can record only the asanas and then they can post it on YouTube. Exactly. Thank you so much, ma'am, for that. One more thing, ma'am. My dad just recently, like 2 days back only, my dad had a severe cervical attack and he's having this dizziness and he was vomiting. Then we took him to the hospital and he got some injections and all. So the asanas you have showed me, can he do all those asanas? Because for last 2 months, I guess, he's taking physiotherapy for the cervical. His neck was very stiff. And as the other lady said, he also has this pain, this numbness here, and his neck was stiff. So condition was really bad that time. Now the neck is a little bit relieved, but still like since as I told you, like 2 days back he had severe attack of it, and now he has just dizziness when he's walking. Vomiting part is okay, but he has dizziness while walking. So can he do these asanas? Yes, definitely he can start whenever he wants to, but make sure you or someone is there and make sure he's doing it with proper alignment. Okay, alignment again is very important. I will be posting the asanas videos showing each and every alignment, and then you can guide him accordingly. क्योंकि alignment थोड़ा सा भी गलत होगा तो effect जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जाएगा. So alignment, and then make sure someone is there to motivate him while doing the asanas, because when he'll do it alone he will get bored and he will be like, okay, I don't want to do that. He will come back
There Right. should be one person to motivate him to maintain the pose for longer, and he can do all these asanas. There's no issue in that. Oh, and he has this Definitely, since like definitely. in Gomukh Asan, and the other one which was the sitting thing, in the sitting asan, he has knee pain as well. So will should he be doing this Gomukh and the sitting posture one? Okay, what you do is while doing Gomukhasana, he can sit in Sukhasana as well. Acha. This normal Sukhasana also, and make sure Right, he's right. just doing the hand postures. Right, right, That's right. it. That Because also. there's Right. Ma'am, nothing to do with the legs when we are working on All right. cervical. So we can modify the poses according to our comfort level and make sure he's using the belt again so that he will be able to hold it for long. The more chest expansion, the more shoulder stretch, the less cervical. And then Right. third thing, you make sure whenever he's sitting, no, just tell him Yeah. sit. Just tell him that he grabs the belt nicely and sits like this for at least 10 breaths or 12 breaths. And then if his hands allows, just make sure he's locking the hands, chest out, and then he's sitting nicely like this with his neck in front. Okay, not looking down, not looking up, center. And then In he front. can sit like this on the chair as well, on the bed as well, no problem at all. But make sure he's doing this stretch every day, morning and Every. evening. Okay? Right, right. Thank you so ma'am, much, ma'am. Thank you so much. Okay, Minu. ma'am, Hello, ma'am. ma'am. Yes, Mridula ji. Just a second, Shruti ji. Yes, Mridula ji. मेरा अभी तो ये था सर्वाइकल, बट नाउ आई एम गेटिंग वेरी रिलीव्ड क्योंकि मैं योगा स्टार्ट कर दिया। दिसंबर में मैंने नहीं किया था बिकॉज बहुत सीवियर अटैक था, एंड नाउ माय थंब इज नम, थंब एंड दिस फिंगर। तो Okay. व्हाट शुड आई डू फॉर these two? Okay, just the thumb and this finger. Thumb and finger, this finger. Okay, what you do is, again, then, whenever you are free, whenever you have no work to do, just make sure we are pressing this region, Like the this? center region. Yes, and then This? press it hard. See here. Press it hard. This is a fascia release thing. Okay, when we are just doing this thing, just press it hard. You will automatically feel a good effect here again, and then the blood circulation in these two fingers will improve. So make sure we are pressing, 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 and then releasing, releasing. But then not with very soft hands. We are doing it nicely. Okay, just try this. If it is not effective, I'll let you know the other thing. Okay, Mridula ji. Okay, thank you. Yes, Shruti ji. Hello, ma'am. Yes, Shruti ji. Go ahead. Ma'am, just want to share a few things. I'm dealing with cervical problem from last 20 years, I suppose. But कभी उसमें high point पे आता है, ठीक हो जाता है, और कभी low point भी आता है, वो ठीक हो जाता है. But after मतलब doing this yoga, drastic change in myself, my daily routine, and it is very, very helpful. I'm so happy. I'm so relieved now. Though I do all these practicing, I practice all these yogas, which you've been telling us. अब अलग से भी हम इसको करेंगे तो और भी relief होगा. And I'm so Very glad. effective. Yes. Because after my marriage and children, I put on lot of weight. मैंने 100 kgs हो गया था मेरा weight after my son took birth. तो उसको मैंने कम किया, पहले तो जुम्बा से, देन फिर मैंने योगा से, अब तो मैं योगा कंटिन्यू करती हूँ. पर वेट गेन से भी मुझे बहुत सर्वाइकल का, नमनेस का, इसका बहुत इशू रहता था. बहुत Obesity चक्कर is आते. also the another reason for Yes, cervical. बहुत. कभी-कभी cervical और spondylosis hereditary भी होता है. Okay, hereditary भी रहता है, और कभी-कभी obesity भी उसका एक मेजर कारण है cervical का. तो जैसे yes. ही हम weight gain करना शुरू करेंगे, ये सारे issues हमारे अंदर आना शुरू करेंगे. तो weight management very Yes. very important. और अब जैसे कुछ रात में आई अवॉइड ईटिंग कार्ब्स, या कभी कभी तो होता है मैम, मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहने की कोशिश करती हूँ, पर हमेशा स्ट्रिक्ट नहीं रह पाते, तो कभी हो जाता है. पर रात में अगर कभी ऐसा कुछ खाया जिससे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, उससे भी ये एक्टिवेट होता है गैस्ट्रिक. आई हैव ऑब्जर्व दिस. हाथ में नमनेस, हाँ, ये जो वात पित्त और आप जो बताए, ये तीनों का जो बैलेंस नहीं रहता है, वो सबसे बड़ा कारण है, मुझे ऐसा लगता है.
और आई वॉज इन टू टीचिंग जॉब बिफोर मैरिज ऑल्सो, आफ्टर दैट आई हैव स्टॉप्ड। तो उसमें मेरा पोस्चर यही रहता था ऑल द टाइम, चेकिंग वाइल डूइंग, उससे मेरा ये बहुत बढ़ गया। पर I was into dancing. I used to dance a lot. Now also during my cervical also, carrying my heavy weight, still I used to dance. उससे मेरा बहुत, क्योंकि वो एक्सरसाइज है, उससे बहुत कंट्रोल हुआ था। पर मैम योगा तो मतलब बहुत ज्यादा मेरे लिए, मतलब मेरे लिए तो एक ब्लेसिंग ही हुई। इससे मेरा बहुत कंट्रोल हो गया। मुझे पूरे टाइम चक्कर आते थे, मैं पूरे टाइम डिजीनेस, इरिटेशन, और ये पीछे एक दोनों पॉइंट पे, पीठ पे एक पॉइंट पे बहुत पिन पॉइंटिंग पेन होता था नर्व कंप्रेशन से। वो मेरा रिलीफ है। अभी भी है मैम काफी परसेंटेज सर्वाइकल का, पर वो भी चला जाएगा, आई एम डेड श्योर, बिकॉज ऑफ दिस योगा। बिल्कुल चला जाएगा, बस आप करते रहिए योगा, और ये जो आसन है ये आप अलग जी से जी, शाम में और करिए, इट विल यस गो यस, परमानेंट, आई कैन आई विल अश्योर डू यू। योगा टिल आई एम अलाइव। आई गुड विल गुड, नॉट लीव योगा नाउ। वेरी वेरी थैंक यू नाइस, सो मच। एंड मैम ओके आप तो ओके। ग्रेट इंस्ट्रक्टर हैं ही, आई एम सो ग्रेट एंड ग्लैड कि आप जैसे इंस्ट्रक्टर हमें मिले, क्योंकि योगा बहुत सारे लोग सिखाते हैं, पर आप जिस तरीके से सिखाते हैं ना, इट्स रिमार्केबल। Means a lot, ma'am. Means a lot. This all थैंक यू love मैम। I just need, and that's why it motivates me to keep showing myself up every day. So I यस I just मैम, love it when you all पर love यू me. Thank डिजर्व you दिस so much. लव मैम, यू ट्रूली डिजर्व दिस लव। Means a lot. Means a lot, Shruti. Thank थैंक you यू so मैम। much. Okay. मैम हाँ मैम जी मेरी रानी जी। राइट साइड से लेफ्ट साइड कम एक्टिव है, राइट साइड हाँ से लेफ्ट साइड कम। वो नेचुरल है रानी जी, हमारा बॉडी का एनाटॉमी ही कुछ ऐसा होता है। हमारा बॉडी जो है उसका मैकेनिक्स और वो सब अगर हम समझेंगे तो हमारा एक साइड, क्योंकि हम ज्यादा यूज करते हैं, वो थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहता है, थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है rather देन द अदर साइड। जो दूसरा साइड होगा वो हमेशा हर इंसान का, मेरा भी, मैं योगा प्रैक्टिशनर हूँ बचपन से, फिर भी मेरा एक साइड, जब मैं एक साइड आसन लगाती हूँ वो ज्यादा अच्छे से लगते हैं, दूसरी साइड मुझे थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत लगती है। तो वो नेचुरल है, उसको परेशानी में लेने की कोई जरूरत नहीं, इट इज एब्सोल्युटली नेचुरल कि एक साइड ज्यादा अच्छा रहेगा, एक साइड थोड़ा सा डिफिकल्टी हमें रहेगा। तो इसमें टेंशन लेने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। पर हाँ मुझे कोशिश करनी सब है वो उस साइड को स्ट्रेंथन करने के लिए, उस साइड में हमें आलस नहीं करना है। जब भी कोई आसन हो रहा है तो उस साइड पे हमें जस्ट डबल एफर्ट्स लगा के उस आसन को अच्छे से करना है, ताकि वो साइड भी उतना ही खुले और उतना ही स्ट्रेंथन। ओके। लेकिन मुझे लगता है ज्यादा ही कुछ होता है, मुझे लगता है कि ज्यादा ही कुछ मतलब वीक है। हम्म, ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी खुद से भी। योगा तो है ही है जो आप कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा खुद से भी, जो भी साइड आपको ज्यादा वीक लग रहा है उस साइड में ज्यादा स्ट्रेचिंग दीजिए। जब भी आप फ्री बैठे हैं तो अच्छे से स्ट्रेच कीजिए उस साइड को, जितना स्ट्रेचिंग देंगे उतना मसल रिलैक्स होगा, और जितना ही मसल रिलैक्स होगा उतना आपको आराम मिलता जाएगा उस साइड में। ओके। और मेरी सर में चक्कर भी आती है मैम। रानी जी, आपने ज्वाइन कब से किया है योगा? वो तो 1 महीने भी नहीं हुआ। हाँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। पेशेंस के साथ सब हो जाएगा, 6 महीने में, 3 महीने में आप फील करने लगेंगे ये चक्कर, ये स्टिफनेस, एक साइड ज्यादा कम, ये सब चला जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस, मैं अभी आपको कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि 1 महीने से कम ही हुआ है। 3 महीने में आप खुद देखेंगे कि ये सारी शिकायतें आपकी चली गई, ठीक है। तो अभी ये शिकायत करने का कोई वो नहीं है। हेलो ओके मैम। मैम। Okay. Okay, now I हेलो will be मैम। leaving the session as I have already exceeded the time limit. Okay, everyone, see you all. I will see you all. Take care. थैंक यू मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो